हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निर्मलांशु हियर। तो कल लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? हमने डिराइव किया था W इक्वल टू दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। ओके, ये हमने डिराइव किया था। और W इक्वल टू निगेटिव when work is done by the system, by the system, okay, and W equal to positive when work is done on the system। समझ में आ रहा है ना ये बात? ठीक है, तो ये हमने डिराइव किया था। मतलब ये W इक्वल टू पॉजिटिव होगा जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, एंड W इक्वल टू निगेटिव होगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अभी ये सब रिलेशंस को, और एक रिलेशंस हमने देखा था कि W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log of V2 by V1, ओके, और which is also equal to minus 2.303 nRT log of P1 by P2। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशंस लास्ट क्लास में देखा था। तो I said also that these expressions are very important because we need these expressions to solve the numericals। तो न्यूमेरिकल्स को लेके ये इस एक्सप्रेशंस को लेके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम पे। ठीक है, सो नाउ लुकिंग ऑन टू दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व few numericals for you, but see students, it is not possible on my part to solve all the numericals in the class, so I will show you just the way or the approach how to solve this type of numericals coming on the basis of these equations। okay, so let's see one numerical। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो क्वेश्चन जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, दिस आर ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड इन योर एनसीईआरटी बुक, एंड देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस ऑन योर एनसीईआरटी बुक। नाउ यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, एंड इफ यू फाइंड ए डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। ओके, सो चलो पहले न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या होता है। A 5 लीटर सिलेंडर, क्वेश्चन क्या है? A 5 लीटर सिलेंडर contained 10 moles of oxygen, contained 10 moles of oxygen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, okay, due to sudden leakage through the hole, all the gas escaped into the atmosphere, all the gas escaped into the atmosphere, all the gas escaped into the atmosphere, and the cylinder got empty, ठीक है, and the cylinder got empty। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। If the atmospheric pressure is 1 atm, if the atmospheric pressure is 1.0 atm, तो क्या बोला है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, calculate the work done by the gas। ओके, ये है क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज ए एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो यू सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं।
A 5-liter cylinder contains 10 moles of oxygen at 27 degrees centigrade. Due to sudden leakage through the hole, अभी सिलेंडर में लीकेज हो गया है, all the gas escaped into the atmosphere and the cylinder got empty. Now the question is, if the atmospheric pressure is 1 atm, we have to calculate the work done by the gas. Okay? तो अभी इसको निकालना पड़ेगा कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है. ड्यू टू लीकेज देयर इज चेंज इन वॉल्यूम. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम. सो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सिंस देयर इज लीकेज इन द सिलेंडर and all the gas escaped, so there is definitely change in volume. ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर है. 5 लीटर पहले वॉल्यूम था. अभी टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में. 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन. ठीक है, now it is converted to 300 Kelvin. अभी कितना मोल्स ऑफ गैस है? that is n equal to 10 moles. n equal to 10 moles. Okay, and then pressure is 1 atm. pressure given है 1 atm. ठीक है, and the value of gas constant that you have read in our states of matter chapter, if you remind very well, that this gas constant, universal gas constant R, has got few number of values. Certain number of values are there, like 8.314 joule per Kelvin per mole, like 0.0821 liter atm per Kelvin per mole. So there are many types of values of R. Okay, now we have to select which value we will take depending on the terms used, so that some units get cancel out. Okay, तो प्रेशर क्योंकि एटीएम में है, प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो ये वॉल्यूम गैस कांस्टेंट का इट विल बी वेरी गुड इफ वी टेक दिस वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, दैट इज 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. ठीक है, नाउ इट विल बी good enough for us if we take this value of R, because pressure is given in atm and volume in liter. So in gas constant also we should have these values, and temperature is also in Kelvin. So in gas and the number of mole is also in mole. So these values according to this given conditions, it is good. It will be good enough for us if we take this value of gas constant. ठीक है, तो अभी इसको निकालना है, तो B फाइनल निकालना है. तो B फाइनल क्या है? So B फाइनल is equal to, we know that PV equal to nRT. We know that PV equal to nRT. तो V final equal to nRT by P is equal to 10 moles into 0.0821 liter atm per Kelvin per mole. Okay, into 300 Kelvin divided by प्रेशर है 1 atm. तो देखो बच्चों क्या होता है, ये मोल कैंसिल हो रहा है, ये केल्विन कैंसिल हो रहा है, ये एटीएम कैंसिल हो रहा है. तो वैल्यू आ रहा है हमारा लीटर में, एंड दैट वैल्यू विल बी इज इक्वल टू 246.3 लीटर. 246.3 लीटर. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस पहले था 5 लीटर. अभी लीकेज के कारण, ड्यू टू लीकेज सम गैस हैज एस्केप्ड ऑनटू द एटमॉस्फेयर and we are left with 246.3 लीटर. ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है? तो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V.
दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, तो V फाइनल क्या है 5, V फाइनल है 246.3 लीटर माइनस 5 लीटर इज इक्वल टू 241.3 लीटर, 241.3 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम। अभी आपको निकालना है क्या, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। सो टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस वी नो दैट द फॉर्मूला इज W इक्वल टू P डेल्टा V। अभी W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होगा या प्लस P डेल्टा V होगा, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होगा या प्लस P डेल्टा V होगा, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होगा, क्योंकि वर्क इज डन by the gas means work is done by the system. So step 2 क्या है, step 2 is W equal to, we know that W equal to minus P delta V। ठीक है, तो माइनस P डेल्टा V होने से तो क्या होगा, P था हमारा 1 atm इंटू वॉल्यूम क्या है 241.3 लीटर, means you are coming with a value that is minus 241.3 लीटर एटीएम। अभी देखो स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, W का कितना आ रहा है, W इज इक्वल टू माइनस 241.3 लीटर एटीएम, बट वी नो दैट वर्क का यूनिट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वर्क का यूनिट शुड बी इन जूल। The unit of work and heat we have seen in our last class that the unit of work and heat should be in joule. So we have to convert this liter atm into joule. ठीक है, so there is a conversion factor that is 1 liter atm is equal to 101.3 joule, 101.3 joule. So तो W क्या होगा, so this is a conversion factor, so W is equal to minus 241.3 into 101.3 and that will be in joule now. So its value is minus 24 minus 24.44 किलोजूल, 24.44 किलोजूल। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा इसका क्या आएगा वैल्यू, ये तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो पहले इसका वैल्यू आएगा जूल में आएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में। तो पहले क्या वैल्यू आता है माइनस 24444 माइनस 24444 जूल। नाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू kilojoule, that is minus 24.44 kilojoule, because we know that this kilojoule is the SI unit of heat, watt, and joule is the CGS unit of watt. So we always keep the units in SI system. Okay, that we people know very well in our from our school days knowledge. Okay, now this is how we have to solve this type of questions. Now और एक इक्वेशन था ना W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log of B2 by B1, और एक था माइनस 2.303 nRT log of P1 by P2। तो ये सब एक्सप्रेशंस को लेके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, तो चलो ये भी देखते हैं। तो ठीक है, so let's see how to solve those type of questions where we need to use the expression of watt, that is W is equal to minus 2.303 nRT log of B2 by B1, or W is equal to minus 2.303 nRT log of P1 by P2। तो क्या क्वेश्चन क्या है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी।
Calculate the total work done in the expansion of. Calculate the total work done in the expansion of an ideal of 2 moles of an ideal gas, okay, or 2 moles of an ideal gas from an initial pressure of तो इनिशियल प्रेशर क्या है 4.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 4.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके, to a final pressure of कितना है 2.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब at 298 केल्विन और यहाँ पे हमको मतलब क्या है R का वैल्यू दिया गया है, मतलब which value of R we will have to use is 8. R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. That this unit of R we have to use. Okay. So let's see how to solve this type of questions. So the solution is, so available data क्या है, n क्या है, as per question n is equal to 2 mole. ओके, प्रेशर P1 मतलब इनिशियल प्रेशर अगर P1 है तो P1 कितना है 4.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब। प्रेशर P2 फाइनल प्रेशर अगर P2 है तो P2 इक्वल टू 2.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, सो टेम्परेचर R का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, और टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन, और R का वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, नाउ वी नो दैट W is equal to minus 2.303 nRT log of P1 by P2, okay, log of P1 by P2। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि which implies W is equal to 2.303 nRT log of P2 by P1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, सो log of P2 by P1। सो P2 क्या है, P2 है हमारा 2.0 log of P2 by P1। सो log of P2 क्या है 2.0 into 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर, और P1 क्या है 4.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल फाइनल प्रेशर क्या है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। मैं भी तो बोल रहा हूँ कि न्यूटन पर मीटर क्यूब मतलब क्यों दे रहे हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ओके, सो W इक्वल टू 2.303 nRT log of P2 by P1। ओके, तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बट व्हाट वी डू, वी विल टेक दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू n का वैल्यू कितना है 2 मोल, ओके, इंटू R का वैल्यू किया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल,
टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन, लॉग ऑफ P1 क्या है 298 केल्विन, लॉग ऑफ P1 क्या है 4.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल जा रहा है, ये कैंसिल जा रहा है, दिस गैस कैंसिल आउट, दिस गैस कैंसिल्स आउट, then this mole and this part mole also gets cancels out, this part Kelvin and part Kelvin and Kelvin also gets cancels out, and now log of 2.0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ जाएगा। so log 2 का वैल्यू हमको मालूम है, so 2.303 into 2 into 8.314 into 298 into log 2 का वैल्यू कितना है, log 2 का वैल्यू है 0.3010, 0.3010 इज द सिंस, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिंस log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ठीक है, so with these values we will get the answer as -3435 joule. Now we have to convert this joule into kilojoule. So it will become as -3.435 kilojoule. In this way we have to solve the questions where we need to use this expression of work and another expression. By using another expression, that is W equal to -P delta B, we have solved one question also. So in this way you have to solve all the questions of your book. The more you will solve the numericals, the more will be the concept clear. Okay, because until unless you solve the questions, the concept of how to solve the questions or how to approach a question, it will not be clear at all. And if you find any difficulty in solving those numericals, just take the snap of the question and send it to me in my WhatsApp number. I am here to help you people all the time. Okay, so in this way you will solve. Now I am going to start a new topic of your this thermodynamics chapter. So the name of the topic is internal energy, which is denoted by U, capital U. So the topic is internal energy, which is denoted by capital U. ठीक है, अभी what is internal energy now? Means every substance in this universe has got a definite amount of energy. Means every substance of this universe has a definite amount of inherent energy. Means every person or everything in this universe have their own energy. That own energy or the intrinsic energy of a system is called the internal energy of the system. Now suppose we are doing a reaction, because since we are dealing with chemistry, so we will be dealing with reactions. Suppose we are doing reactions A to, we are getting product P. Okay, now see, this A has got a certain amount of energy which is represented as, since it is a reactant, so we can write it as UR. And this P, which is a product, it has also got an intrinsic energy which is represented as UP. So therefore, change in internal energy, that is, now change in internal energy, जब change का बात आ रहा है तब क्या होगा, delta U will be internal energy of product minus internal energy of reactant. Now if UP is greater than UR,
If UP is greater than UR, then delta U is positive, and if UP is less than UR, then delta U is negative. Okay. So अगर internal energy of product is now greater than internal energy of reactant, then delta U, that is change in internal energy, will be positive, and if internal energy of product is less than the internal energy of reactant, then delta U will be equal to positive. Now we have seen that it is not at all possible to determine the exact values of internal energy of products and reactants which are taking part in the reaction. It is not at all possible, it is seen that it is not at all possible to determine the exact values of internal energy of product and reactants taking part in the reaction. Now this problem can be solved if we do the reaction at constant temperature and volume. Means at constant temperature and volume, no work will be done by the system or on the system. मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना. It is not at all possible to determine the exact values of internal energy of a system, of reactants or products, okay, which are taking part in the reaction. Now this problem can be solved if we do the reaction at constant conditions of temperature and volume. So if we do the reaction at constant temperature and volume, no work will be done by the system or on the system. Means that the heat energy which we will supply, that will be equal to our internal energy. Means the heat energy का symbol क्या है? What is the symbol of heat energy? That is Q. Okay, that we have said in my last class. That is Q. Now since it is Q is constant, this Q is at constant, this Q will be equal to delta U if it is done at constant temperature and volume, which is written as QV. So delta U is equal to Q suffix V. Okay, so means that internal energy is equal to heat energy exchanged between system and surroundings. Internal energy, that from this you can write internal energy is equal to heat energy exchanged between system and surroundings, okay. So between system and surroundings जो heat energy exchange हो रहा है between system and surroundings at constant temperature and volume, at constant temperature and volume. That is we can write delta U is equal to Q at V. ठीक है, so delta U is equal to QV. So this is the relation between heat energy and internal energy. Now using this heat energy and internal energy, we will derive the first law of thermodynamics, which I am going to do it in our next class. So the first law of thermodynamics, just I am going to say that the statement of thermodynamics is that energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another. Okay, the energy can neither be created or destroyed, but one form of energy can be converted into the other form and vice versa. So this is the first statement of the first law of thermodynamics. The second law statement is that the sum total of energy of universe remains constant. The second statement is sum total of energy of universe remains constant. Okay, and the third important statement is that it is impossible to construct a perpetual machine. Okay, means which can that is a machine which could perform work without consuming any energy. Okay, so what is this first law of thermodynamics? And the first law of thermodynamics is, so using this internal energy and heat energy concept, so we can derive
or we can have our first law of thermodynamics. So the first law of thermodynamics has got some statements. The first statement is that this is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Sorry, that it is first law of thermodynamics. Okay, what is this first law? The first law has got some certain statement that is energy can neither be created nor destroyed but it can be converted from one form to the other form. This is one statement of first law. Second statement is the sum total of energy of universe. Sum total of energy of universe remains constant. Remains constant. Okay, this is second statement. And the third statement is that it is impossible to construct a perpetual machine. Now what is perpetual machine? That is a machine which can perform work without consuming any energy. Which can perform work without consuming any energy. Okay. So these are three statements of first law of thermodynamics. So first statement क्या है? Energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form. The sum total of energy of universe remains constant. And the third statement is that it is impossible to construct a perpetual machine, that is a machine which can perform work without consuming energy. Means that the energy is conserved. So means that is we can say energy remains conserved. So this law, first law of thermodynamics, is also stated as law of conservation of energy. And this law was given by Helmholtz. Okay, this law was given by Helmholtz. Okay. So this first law of thermodynamics can also be said as law of conservation of energy. Now in my next class we will see the mathematical interpretation of first law of thermodynamics. Okay, mathematical interpretation of first law of thermodynamics. So with this I want to conclude my session here for today. So study well, sincerely, and I am here to solve any doubts or any clearings from your side. Okay, my dear students, thank you very much for your patience hearing. Thank you.